Dear viewers and lovely students, welcome back to my मिसी पाठशाला। ये मिसी पाठशाला क्या है? इट इज़ मिसलेनियस पाठशाला जिसमें हम कई तरह के स्टडीज़ करेंगे। पर्सनैलिटी, वर्ड, इंग्लिश, स्टडीज़, पोएम्स, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो आज के मिसी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी फ्रेंड्स के बारे में। ओके, सो लाइक जो मैं पसंद करता हूँ पढ़ाना, उस तरीके से हम जाएंगे। पढ़ाई से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ वर्ड शेयर करूँगा। आई वॉन्ट यू टू डेवलप ईच डे वर्ड सो दैट यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग मैस्ट्री ऑन द वोकैबुलरी पावर। ओके, सो आज का वर्ड रहेगा हमारे पास, दैट इज सबस्यूम, SUBSUME, सबस्यूम। सबस्यूम का मतलब क्या है? टू कंटेन समथिंग मीन्स टू इंक्लूड समथिंग into something. Okay, synonym would be contain, include. Okay, antonym would be exclude and omit or leave, you can say. How we can make a sentence, हम ऐसे बता सकते हैं like the big party subsumed other several parties. इससे पहले let's talk about one more thing, that is PD, that I love to teach. Okay, मेरा मानना है before getting into the big studies of literature, you must have small other things as a start of, so that you would really like when you get into the literature. चलो आज हम बात करेंगे इन PD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कि कैसे हम नॉन नेटिव स्पीकर और नेटिव स्पीकर में डिफ्रेंशिएशन ला सकते हैं, हाउ वी कैन यूज द सेम सेंटेंस इन अ डिफरेंट वेज। ओके, अगर नॉन नेटिव स्पीकर बोलता है यू नीड टू कंट्रोल इमोशंस, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, सो नेटिव स्पीकर वुड से यू नीड टू रेन इट इन, यू नीड टू रेन इट इन। ओके, उसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन नेटिव स्पीकर कैसे बोलता है, लाइक प्लीज डोंट टेल एनीबडी, प्लीज डोंट टेल एनीबडी, इट विल बी कीप इट अंडर रैप्स, keep it under wraps. Okay, let's move on to the lesson, The Happy Prince. It's a wonderful chapter that we are going to read and understand. Okay, high above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with the thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and large red ruby glowed on his sword hilt. Okay, so let us grasp some of the hard words like gilded. Gilded means to cover with something, to get covered with something, ढका हुआ है, ठीक है। Like maybe you can say coating sort of hilt, that is called the grip part of the sword. Maybe the bat you have seen, उसमें जैसे वो grip लगा हुआ है जिसको पकड़ के बैटिंग होती है। Okay, that's one. You can say simply the handle. Okay, let's talk about the statue of a happy prince stood on a column, like high above on the pedestal. उस पे एक स्टैचू बनी है, एक प्लेटफॉर्म बना है, हाई प्लेटफॉर्म, उस पे स्टैचू बनी है। That seems to be like मे बी सम्मान के तौर पर उसको एक ऊंची जगह पे रखा गया है ताकि वो पूरे राज्य पे नजर रख सकें, ठीक है। दिस हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड हैप्पी, देयर वाज अ रीजन व्हाई ही वाज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस, बिकॉज when he was very young and alive, okay, he never experienced the touch of sorrow. दुख क्या है उसको पता नहीं था, सो बेसिकली उसीलिए उनको रखा गया था। नेवर द एनी काइंड ऑफ पेन, एनी काइंड ऑफ सॉरो, नेवर गॉड एंटर्ड इनटू हिज किंगडम, इनटू हिज प्लेसेस where he was living. So इसीलिए उनका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया। अब जब उनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेथ के बाद, तो राज्यवासियों लोगों ने क्या किया, उनको वहाँ पे रख दिए, एक ऊंची जगह पे उसको रख दिए, सो दैट ही कैन वॉच द हैपनिंग्स इन द किंगडम। गॉट इट? व्हाट इज हैपनिंग विद द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर पीपल, ही वुड से, ठीक है। तो यहाँ पे एक जिंदगी से पहले, एक जिंदगी के बाद तो काफ़ी चेंजेस आता है, वो हम पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, isn't it? Let's. The statue of this happy prince was actually covered with the layers of gold, and it is kind of like, instead of eyeballs there were two bright sapphires. It's one of the expensive stones, वो उस पे लगा हुआ है। ओके, और जो सोड था, उनका जो हैंडल था सोड, वो भी दैट इज ऑफ ब्राइट रूबी स्टोन। आप अंदाजा लगा सकते हो किस हाई प्रेज में किस तरीके से उनके ड्रेसअप को, उनके स्टैचू को बनाया गया था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Swallow, a tiny bird. वहाँ पे क्या, एक बर्ड, एक swallow bird उड़ के आता है। वो बाकी उसके सारे दोस्त 6 weeks पहले चले जा चुके थे, तो उसने सोचा कि आई कैन नॉट बी अलोन हियर, सो आई मस्ट गो एंड बी विद माई फ्रेंड्स। तो वो निकल पड़ा, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस की बात अगर करें
तो यहाँ पे एक बर्ड को ईट से संबोधित नहीं किया गया है. इट्स नॉट जनरली टेकन एज अ बर्ड, इट्स टेकन एज अ human being. That's why a personification literary device is used. That's why it is mentioned as a he. Passage wise, paragraph wise, I'll make the small video so that you can enjoy the lesson. You can understand in both languages. You can understand the words. Okay, thereafter possible we'll talk about the question session. We'll also discuss. But in my Pathsala, you are going to get a lot of things like you will be studying about the verbs. You will be studying about different vocabs. You will be studying about personality development. And of course, we will be talking about literature. Okay, thank you.